Welcome to the FutureTech Spotlight online learning platform. किसी को पता है ये AI word किसने दिया है? And when this AI word attached with the, yes, very good Akhilesh, John McCarthy. John McCarthy in 1956, 55 to 56, in between, he gave this word AI, and afterwards the domain study, whatever the domain study we are doing under this AI subject. Okay, so that we learned, and then we learn how we can what is intelligent behavior, and what other domains we require to incorporate if we want to build a strong AI system. Okay, then we have also learned that the four very important term in AI, that is act like human, think and act rationally. तो ये हमने बात की थी last में कि how we can do this, and we have we gone through with the details of Alan Turing, जिन्होंने पेपर पब्लिश किया था 1950 में with the topic can machine think. Okay, and this is just a definition and conceptual idea, and based on that this whole AI came in the picture. Okay, so that we have learned in the previous lecture. Okay, so now we will see history of AI. Okay, so last we have seen this the subject, what we require to do in this AI, and then now we will see how actually this AI came and what is the current status of the AI. Okay, so these are the timeline where major event occurred in this AI history. As we have already discussed, in 1950, Turing test definition came, and Alan Turing gave the description for the intelligent machine. Okay, so we have already discussed, if the machine behave exactly like human, and the other person did not understand, okay, he has talked with the machine or human being, then that type of system is intelligent system. Okay, and then in 1955 to 56, in between, John McCarthy gave this statement of AI. He has actually gave this particular AI term in Dartmouth conference. Okay, and afterwards we are using this word, and then after in 1961, so after, you can say, 6 year, okay, first industrial robot manufactured, okay, for the industry. Okay, so it's a very basic robot, you can say. ठीक है. Then after in 1964, first chatbot developed by MIT students, and that chatbot can do conversation with the humans. Okay, so that is what the major thing happened in 1964. Chatbot is nothing but a kind of messenger where machine and human can communicate in between. Okay, so that that event occurred in 1964, and then after in 1966, first electronic person came in the picture. It's from Stanford University. Okay, so ये सारी event हो जाने के बाद there was a major setback in the AI, and there was no actually work going on in the AI's domain. Okay, but after 19th century, 1997, Deep Blue came in the picture, and this Deep Blue is nothing but a chess playing computer. Okay, the first chess playing computer. Now to play chess is again a kind of intelligent thing, right? So that come in the picture in or this event occurred in 1997, and then after in 98, first time MIT introduced a robot with emotional intelligence. So now, up till now, they were working on mechanical intelligence of human beings, but now they are starting with the emotions also. So in 1998, they came with the emotionally intelligent robot. Okay, so that whatever the people feelings are there, that is also there in the robot. Okay, so and after that, in 1999, Sony launched
that AI robot, that is nothing but you can say a robot pet dog. Okay, and then after in 2002 Roomba come in the picture, where the Roomba is nothing but a automated vacuum cleaner, okay, which is also called iRobot. Okay, which will clean your room within a second. Okay, so that is today also we can, this is available in Amazon. Okay, so this Roomba device developed in 2002. After 2002, there was a long gap, and in 2011, Apple Siri came in the picture for Apple phone, iPhone. Siri, all of you know, right? And then after in 2011, again IBM. IBM ने क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो लिया था between human and machine. Okay, and the first time that machine win with $1 million prize. Okay, so that quiz show जो है वो किसने विन किया था, रोबोट ने, ठीक है, and that was designed by IBM in 2011. In 2014, again that chatbot came in the picture with major features which is given by the Alan Turing. So now you can think in 1950, Turing test, Alan Turing has given that definition of intelligent machine, but the implementation done in 2014. So you can see how many years, 64 years taken for this step. Okay, so जो चैटबॉट ऐसा चैटबॉट बनाया जिससे थर्ड पर्सन को पता ही नहीं चले कि वो ह्यूमन से बात कर रहा है या फिर वो मशीन से बात कर रहा है, ठीक है. So that is what the basic chatbot was already conceptualized in 1964. Okay, but it is not that much effective. But in 2014 जो चैटबॉट उन्होंने टेस्ट बनाया था, उसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास किया था, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है. इन 2014 now Amazon Alexa launched. Okay, so now everyone you know what is Alexa is. And in 2016 Microsoft chatbot came in the picture, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी वो बनाया. एंड 2017 में AlphaGo developed by Google AI. ठीक है. Now anyone know what is AlphaGo? Yes, anyone? AlphaGo के बारे में किसी को पता है? AlphaGo is a kind of you can say AI system for board games. Okay, so whatever the board games are available online, you can play any of the board game with the machine. Okay, and that is given by the Google AI. Okay, so that system was developed in 2017. Okay, so this is what the history, or you can say major event occurred in the AI timeline. Okay. But if we talk about the real you can say inventions in AI और कैसे step by step उसका growth हुआ है, अगर वो हम देखेंगे, so we can see that कि AI जो है उसके लिए सिर्फ एक discipline or domain is not enough. There are so many other domains also required to develop one perfect AI system. Okay, so now it is not only the question of computer science and engineering, not only hardware and software, but the philosophy is also came in the picture, where the rules or reasoning. Okay, because AI is again a kind of a system which will give you some decision end of the day. Okay, so the system must be able to make decisions based on what? Reasoning. Okay, so philosophy is also a kind of a domain which is attached with the AI. Okay, and then after, of course, mathematics, so many mathematics, because you require to implement the algorithm, you require to optimize that algorithm, so mathematics is also there. Now you want to develop a system just like a human being, means cognitive science and psychology is also there, because you want to study the human thinking. Clear? So whatever the human level thinking or animal thinking is there, that is also attached with this AI system. Okay, and of course neural science, brain activity,
and linguistic if you want to work on the natural language processing. So these are the domain we require to study if we want to go for the perfect AI system. Clear? But the birth of this AI system was in between 1943 to 1956. As I told you, in World War II, first time they came with the AI system because they want to hack that German communication. Okay, but they don't know actually that this is what the thing related to AI actually. Okay, and then after in 1943, they came with the propositional logic and primitive algorithm. आपको इवेंट पता है एलएम ट्यूरिंग का, ठीक है. And then after Shannon, information theory came, which give the again documentation, or you can say theoretical algorithm of chess playing computer. Okay, so that came in between this 43 to 56. Okay, and that Aristotle theory and logics and syllogism came for more rules implementation in the AI. ठीक है, तो ये उसका वहां पे बर्थ हुआ था. एंड देन आफ्टर इन 1952 टू 1956 1969, okay, major thing came for the AI, with the AI, or you can say very basics to go to advance. Okay, so directly we cannot go to any advance in any domain, but we require to make our base strong, right? And that thing done in 1952 to 1969. Okay, where I told you that Dartmouth conference happened only on this AI or intelligent system, and John McCarthy was the one who gave this AI word. Okay, and apart from that, he has also given a very important thing, that is AI programming language, Lisp. Okay, so nowadays also people are using Lisp and Prolog. These are the two languages we are using for AI programming. Okay, so today also we are using these languages, which is developed by John McCarthy in between this timing. Okay, then first neural network machine came in this duration given by Markvin. Okay, then Newell and Shimon give a GPS system. Okay, this is also very important in the AI. Then after, there are so many modern algorithm came for the search, like A star, AO star, game tree search. Now we will see all these algorithms in detail. You are having this in your second chapter. Okay, so we will see all these things, why, how this will work, and you will exactly work on this AI programming language because you are having that first two practicals on this AI programming. Okay, so you will solve the problem using AI system. Okay, then after in 1966 to 1974 is the domain where they already gave the base for the AI in the 52 to 69, and then they worked on the knowledge. Okay, now as a whole, what human being can do, what human being can think, that replication or imitation is not possible. Okay, not possible, of course, because that time that much computerization was not there, that much technology was not evolved. Okay, so that's why they came with the conclusion that we require to reduce this difficulty, and we require to divide our problem in the sub problems. And what they have done now, they went for the domain specific knowledge system. Okay, so instead of going for the whole human being structure to imitate, they worked for the problem specific structure. Okay, so now if I want to work on, let's say, automated vacuum cleaner. Okay, so now that vacuum cleaner is again an intelligent device, of course, because this is automated system. So whenever the person that vacuum cleaner will come to any dirt, या कहाँ पे कहीं पे उसे कचरा दिख रहा है, तभी वो उसको शक करेगा, और या फिर वो क्या करेगा, मूव करेगा एंड फाइंड फॉर द डस्ट. ठीक है, तो डस्ट के लिए वो क्या करेगा, सर्च कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंट सिस्टम, बट दिस इज डोमेन स्पेसिफिक. Okay,
So that particular system has not required to implement whole that AI features, but it is based on some domain. Okay, उतना domain का ही उसको काम करना है. So उसके base पे काम हुआ कब 1966 to 1974. Domain specific knowledge is the key to overcome this existing difficulty, and knowledge representation paradigms, declarative and procedural representation came in the picture. So now structural things came in the picture, you can say. Okay, so before we go for the actual डिवाइस वी रिक्वायर्ड टू स्ट्रक्चर दैट प्रोसेस. अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी बनाते हो तो आप उसका क्या करते हो, पहले तो ब्लूप्रिंट तैयार करते हो. कोई अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसका भी ब्लूप्रिंट रहता है, ठीक है. सो नाउ दे वेंट फॉर द स्ट्रक्चर. ओके, एंड दे वेंट फॉर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज रादर देन द होल सिस्टम. ओके, now after getting this domain specific base, they went for knowledge based system. So knowledge based system means what? It worked on specific area. Okay, so like the first knowledge intensive system was the 3D structure of complex chemical compounds. Okay, so that was the first intelligent system in the chemical domain. And then after rule based expert system came in the picture, where the system can diagnose blood infectious disease and can implement 450 rules, okay, to find out this disease and give the decision. Okay, so that type of system came in the picture. Then as a whole expert system cell came in the picture, which will give the framework to build the expert system. So instead of going for the specific expert system, now generalized expert system is there, which you can use for any domain. Okay, so that will came. And then after knowledge based system came with geological expert system. So this system will give you some decision parameter for minerals. Okay, कहीं कहाँ पे आपका minerals available है, तो वहां पे ही आप उसको mine करेंगे, ठीक है. So that type of thing came in the picture. Now after getting this knowledge based system, now this AI becomes the industry, and the commercializations done between 1980 to 1989. Okay, so now commercialize means now there are so many AI tools available in the market. Okay, so that you can implement in your system. Okay, so that will come in the picture in this duration. And then if we talk about the current trends in the AI domain, then the nowadays AI you can say systems are more realistic, more goal oriented, practical, application oriented. Okay, so and in after 1990 that neural network and genetic algorithms also emerge, and now we are actually going towards you can say human system. Okay, so पहले तो वो भी सिस्टम होती थी, वो ज्यादा मैकेनिकल सिस्टम जो लगती थी, अब वो ज्यादा क्या लगेगी, ह्यूमन सिस्टम. ठीक है, तो उसके वहां पे हम लोग ज्यादा अभी जा रहे हैं. ठीक है, सो ये हमारा जो है वो करंट ट्रेंड्स है. दिस आर द एप्लीकेशन डोमेन ऑफ एआई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी डोमेन, कोई डोमेन छूटा ही नहीं है कि जहाँ पे एआई सिस्टम ना हो. ठीक है, so if you can see this, there are so many domains available. अगर हम गेमिंग की बात करें तो कौन बताएगा गेमिंग में एआई कैसे यूज होता है? Yes, anyone? How we can use AI in gaming? Fortnite and PUBG is not AI system, I think. Is it? OT, bot. ओके, अच्छा, इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता है गेम के अंदर, बट आई नो दैट द PS4 और PS3 हैविंग VR games, right? Virtual reality game where you can play all the sports. Okay, so where computer is one player and you are another player. Have you played that type of game? Okay, so that is what the AI system you can see. Okay, so if we talk about specific domain application, then these are the domain. The first is gaming domain, जैसे हमने बात की थी. Yes, Shaifullah, playing chess is one of the
AI application, ठीक है, not only chess, poker, tic-tac-toe, there are so many games available nowadays. And as I told you, AlphaGo is one of the AI, Google AI application, which is only for the board games. Okay, so and VR games in PS3 4 जो भी आ रहा है PS5 उसमें आप खेल सकते हैं, ठीक है. Then after natural language processing, of course we have already seen this in Siri, Alexa, ठीक है, ये सारे क्या है, of course they are interpreting human language and giving you answer. Okay, then expert system, all the BI systems like business intelligence systems, which will not only give not only take the data and give you analysis, but it is the system also give you you can say decisions. Okay, which is very very important. Okay, what should be done by the company? Okay, that is also given by the system. So that is there in expert system. Then vision system, again one of the application of AI. Vision system में क्या होता है, this systems understand, interpret and comprehend visual inputs. Okay, so visual input कैसे, जैसे spying aeroplane takes photograph which are used to figure out spatial information. अच्छा, तो सैटेलाइट के थ्रू जो अभी मास पे या फिर क्या चल रहा है उसका जो फोटोग्राफ्स आते हैं, दैट इज आल्सो इंटेलिजेंस सिस्टम, ऑफ कोर्स. Then doctor use clinical expert system to diagnose the patient. Okay, police can use computer software that can recognize the face of criminal with the stored portrait made by the forensic artist. Okay, so that is also, ये तो सबने देखा होगा CID के अंदर बहुत कुछ होता है ऐसा, ठीक है, that is also what AI system. So these are all application of AI in the vision system. Then speech recognition. स्पीच रिकग्नाइजेशन की क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है. सो सम इंटेलिजेंस सिस्टम कैन कैपेबल ऑफ हियरिंग आल्सो. ओके, और वो होना ही चाहिए, देन ओनली दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड द थिंग एंड गिव द आंसर. ओके, बट किस पर्सन का वॉइस है उसको भी रिकॉग्नाइज करना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. ओके, बिकॉज समटाइम्स दैट पर्सन एसेंट मे बी डिफरेंट, that person can use slang languages, noise in the background, change in human noise due to cough and cold, ठीक है. So these are the, you can say, difficulty when you want to recognize human voice. Okay, and that is what the that is where the real research is going on currently in the speech recognition domain. Okay, so this is also one of the application of AI. Then handwriting recognition. Okay, now these are also very very important because we have actually so many scriptures and so many ancient books, okay, available, ठीक है, जो बनाना लीफ के ऊपर भी आज के दिन में डॉक्यूमेंटेड डेटा है हमारे पास. बट it is very difficult to save this type of information because अभी जैसे जैसे और टाइम जाएगा वैसे वैसे वो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंटेड थिंग है उसको वो पेपर पे या बनाना लीफ पे है तो वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, ठीक है. तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस डेटा ऑटोमेटिकली इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, ठीक है. सो उसके लिए ये एप्लीकेशन है हैंड राइटिंग recognition. Okay, so directly it will through image processing it will capture the data and convert into word. Okay, so that is also possible. So that is what one of the application of AI. Then intelligent robot, of course, like human being, humans are having that 5 sense. The same 5 sense can be implemented in the robot, and robot can do the same thing, that is also there. Okay, so robots are also having the sensors to detect physical data from the real world like light, heat, temperature, movement, sound, bump and pressures. Okay, तो ये सारी चीजें भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक रोबोट के अंदर और एक एफिशिएंट जो है वो सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है. So that is also there. Even we can develop a system which can learn through their mistake, which can adapt any new environment. Okay, so adaptive होना चाहिए वो system,
ठीक है. So that is also there, and this is also one of the AI domain for the research. Okay. So these are the domain where actually works are going on, and so many things already done by the researchers. Okay, but what we see AI as future. Okay, so as a future AI हम क्या देखना चाहते हैं? ठीक है, तो क्या देखना चाहते हैं? तो सब लोगों ने वो रजनीकांत की कौन सी मूवी देखी थी? एआई वाली एक मूवी थी ना रजनीकांत की. यस, रोबोट. रोबोट. यस, उसका नाम क्या था? चिट्टी. चिट्टी. यस यस यस. तो उसमें वो अपना क्लोनिंग कर लेता है, देखा था ना सबने? ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. वन डे होगा ऐसा कि भाई इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग computerized robots are only developing the robots, and whatever the difficulty they are getting, वो difficulty वो overcome करते जाएंगे और इतने smart से smart robot बनाते जाएंगे that human being cannot compete only with that robot. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, और इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग, किसी ने नाम सुना है इसका? ठीक है, हाँ, तो हम लोग फ्यूचर एआई की बात कर रहे थे. ठीक है, सो राइट नाउ वेयर वी आर नॉट एक्चुअली कंपीटिंग विद द ह्यूमन बीइंग. एक्चुअली अभी तक हम एनिमल तक भी नहीं पहुंचे हैं जितनी इंटेलिजेंसी एनिमल की है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द राइट नाउ वी आर इन दिस एआई डोमेन, बट इट इज पॉसिबल कि हम उससे भी बहुत आगे जा सकते हैं. ठीक है, नाउ देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स इन दिस एआई. वन इज थिंकिंग दैट that group is called cognitivists, जो ये सोचता है, who believe that the human conscious can be simulated. Now जैसे पायलट का सिमुलेटर होता है एरोप्लेन चलाने के लिए, या जो भी सिमुलेटर्स होते हैं, वैसा हम ह्यूमन बीइंग का जो कॉन्शियस थिंकिंग, कॉन्शियसनेस है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो इमोशंस, फीलिंग्स है, या जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स है, उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं. ऐसी भी एक ग्रुप है. और एक ग्रुप है एंटी वाला, who believe that it is not possible. Okay, so that way we are having two groups, but in 2050 we are estimating that we will be in the era where we will get the greater than human super intelligence. Okay, that may be possible. Okay, और वो ऐसा होगा कि वो मशीन जो है वो इतना आगे का होगा कि which will exceed the human brain in terms of intelligence. Okay, so that is there. तो मैं बात कर रही थी स्टीफन हॉकिंग की. किसी ने नाम सुना है इसका? ठीक है, जिन्होंने एआई के बारे में बात किया था. नाउ द स्टीफन हॉकिंग इज हैविंग द सेम आईक्यू लेवल एज अल्बर्ट आइंस्टाइन, 160. ठीक है, उसका भी सेम है. ठीक है, उसने बोला था कि दिस इज द वर्स्ट थिंग वी आर डूइंग इन दिस कंप्यूटर, इन दिस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. जो एआई पे हम काम कर रहे हैं ना, वो वर्स्ट थिंग कर रहे हैं, बिकॉज इट मे यू कैन से कि वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा ह्यूमन सिविलाइजेशन को. यहाँ तक की उन्होंने बात की है, दिस मे बी द रिस्क इफ वी ऑल वर्क ऑन दिस एक्सपर्ट सिस्टम, बिकॉज वो इतना एक्सपर्ट बन जाएगा, बिकॉज ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, वो गलत डिसीजन ले सकते हैं, बट वंस वी मेक स्मार्ट सिस्टम, इट विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, इट विल ऑलवेज लॉजिकली करेक्ट, इट विल ऑलवेज गो रीजनिंग है उसके पास हर चीज करने के लिए, और एडेप्टिव नेचर है. ठीक है, प्लस वो क्या कर सकता है? मशीन लर्निंग. सो इट विल लर्न फ्रॉम इट्स ओन मिस्टेक. नाउ पीपल आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बट द सिस्टम, द इंटेलिजेंस सिस्टम इज नॉट हैविंग दैट थिंग. सो दैट इज व्हाट द रिस्क आल्सो इन्वॉल्व विद दिस. क्लियर? सो इवन एलन मस्क, किसी ने नाम सुना है इसका? यस मैम. हाँ, तो वो फाउंडर ऑफ टेस्ला. यस, having the same IQ, you can say 155. ओके, और उसने सेम बात की है कि एआई मींस हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरा बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं. यही सेम
स्टेटमेंट जो है वो एलन मस्क ने बोला था. इवन एलन मस्क का एक बहुत अच्छा वीडियो था कि जिसमें उसने 5 प्रिडिक्शन दिए थे. एंड वन ऑफ द प्रिडिक्शन वाज आई विल बी इन द लिस्ट ऑफ द richest person. Okay. And now he is the second richest person in the world. Okay, so that is what the statement given by these two prominent you can say figure for AI. Okay, so that is what the risk is. And as I told you, there are two groups in the AI. So one of the group is like cognivist cognivist group जो ये कहता है कि भाई simulation is possible, and one is says कि no, it is not possible. So in that discussion, one of the discussion, the Professor David worked in MIT. ठीक है, उन्होंने ये प्रॉब्लम दिया था कि हाउ कैन वी रिक्रिएट अ लर्निंग थिंकिंग माइंड विथ टेक्नोलॉजी. इट इज नॉट इवन पॉसिबल. सम डू नॉट थिंक सो. ठीक है, सो ये उन्होंने बोला था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ह्यूमन कॉन्शियस. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन नॉट डिफाइन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वी कैन नॉट डिफाइन द कॉग्निटिव स्केल. ओके, and if we want to comprehend this AI, ठीक है, then we require to learn first how we can construct a conscious AI. और conscious AI बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? We require to see what is exactly the consciousness is. Okay, तो उसको measure करने का या उसको कुछ करने के लिए कोई algorithm नहीं है. This is all you can say काइंड ऑफ स्टॉकेस्टिक पैटर्न. ओके, हमारा काम बहुत ज्यादा रैंडम होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा हम रैंडम तरीके से काफी टाइम बिहेव करते हैं. समटाइम्स वी आर डूइंग डे ड्रीमिंग ऑल्सो. लाइक करंटली आई एम टेकिंग लेक्चर, बट हाफ ऑफ द पीपल थिंकिंग समथिंग एल्स, और हाफ ऑफ द पीपल मे बी नॉट इन फ्रंट ऑफ द मशीन पॉसिबल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग. ठीक है, इन आवर माइंड देयर आर सो मेनी वर्ड. हो सकता है कि हम बिना टिकट के बहुत जगह घूम के भी आ जाते हैं. ठीक है, सो दैट कैन नॉट बी डन बाय द एआई सिस्टम ऑफ कोर्स. ठीक है, तो वो उनका कहना है कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, सो साइंटिस्ट नीड टू फिगर आउट द एल्गोरिथम ऑफ थॉट्स, बेसिकली अ वे टू मैथमेटिकली सिमुलेट द ह्यूमन थॉट प्रोसेस. ओके, वो कैसे करना है, कैसे होगा. ठीक है, this is one of the major question in this AI domain. And the human brain rely not only on this mathematical calculation and logics, but it is also rely on chemistry and physics of different molecule in order to function. Okay, so that is also there. So how scientists can replicate this process? Okay, so that is what the problems currently we are facing in this AI domain. ठीक है, तो सबको समझ में आया कि हिस्ट्री क्या थी, क्या एप्लीकेशन है, एंड व्हाट आर द फ्यूचर, व्हाट ऑल फ्यूचर वी आर सीइंग फॉर द एआई, एंड व्हाट द प्रॉब्लम करेंटली वी आर फेसिंग. क्लियर एवरीवन? एनी प्रॉब्लम विद दिस? नाउ वी go towards this types of AI. There are two type of AI. One is weak AI and one is strong AI. Currently, whatever the invention done or whatever the development is going on, we are still in the weak AI milestone. Okay, we have not reached strong AI milestone. Okay, so what is this weak and strong AI? Okay, weak AI क्या है? First of all, weak AI is also called soft AI. Okay, so AI refers to the use of software to study or accomplish specific problem solving or reasoning tasks that do not encompass the full range of human cognitive ability. ठीक है, सो पूरा ह्यूमन बीइंग का जो भी थिंकिंग प्रोसेस या एक्टिंग प्रोसेस है वो पूरा आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डोमेन स्पेसिफिक. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द वीक एआई इज, where we are having only one single task to perform. So goal is only one. There is no multiple goals. Okay. So now in human life there are so many goals. है ना? Education के लिए अलग goal होगा. ठीक है? Knowledge के लिए अलग goal होगा. Private life के लिए अलग goal होगा. So there are so many goals in the mind. But human in intelligent system only one goal at a time. That is what the weak AI. The example is what? Chess program. ठीक है, जो हमने बात की थी डीप ब्लू का. ठीक है, that is weak AI because the focus is only one, that win the race. Okay, so that is what weak. A weak AI does not achieve self awareness. It demonstrates wide level of human cognitive
एबिलिटी, ठीक है. नाउ इट डिपेंड्स कौन कौन सी एबिलिटी करनी है, बट सारी वो परफॉर्म नहीं करेगा बेस्ड ऑन द goal oriented task, ठीक है. So it is merely an intelligent system, a specific problem solver you can say, ठीक है. So that is what the weak AI is, ठीक है. So now what is strong AI? So strong AI is a perfect replication of human intelligence, okay. So strong AI refer to the machine that approaches or supersedes human intelligence if it cannot do typical human tasks, if it can apply a wide range of background knowledge, some degree of self consciousness, then we can say that it is strong AI, ठीक है. दैट वो और उसमें डिस्टिंग्विश करना ही डिफिकल्ट हो जाए कि वेदर दिस इज ह्यूमन बीइंग और रोबोट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग एआई एंड वी हैव नॉट अचीव दैट टारगेट, ओके. So these are the two type of AI system. Yes, we are working on this and जैसे हमने बात किया था सोफिया का, ठीक है. सब लोगों ने देखा वो वीडियो सोफिया का जो अक्षता ने शेयर किया था, ठीक है. So that is what we are going towards that. We are going towards that, but still we are working on it, okay. So what are all limitation of AI? So AI system cannot understand natural language robustly, ठीक है. ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज उसके अंदर फीड किया होगा वो लैंग्वेज वो उसको समझ में आएगा, बट पूरी लैंग्वेज एज अ होल समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एआई. Yes, AI cannot serve the web. We are doing this and we are wasting most of our time for this only, okay. But AI cannot do this. AI cannot interpret an arbitrary visual scenes, okay. Now we can do this. We can do this if we are हम लोग अगर चार रास्ते पे हैं और चार पांच ट्रक आ रही है या कार आ रही है तो हम लोग रोड को क्रॉस नहीं करेंगे, हम इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड करेंगे. दैट इज व्हाट द परसीवेंस, ठीक है. तो वी परसीव द एनवायरमेंट एंड देन वी एक्ट, ओके. So that we can do easily, but AI system cannot. If AI system cannot learn new language, okay. So natural language जो भी है वो नया learn करना, that is not possible with the AI. Cannot construct a plan in dynamic real time domain, okay. So real time domain पे तो वो काम ही नहीं कर सकता अभी. dynamic उसको जो feed किया है, जो उसको दिया है प्रोग्राम, वो उस पे ही काम करेगा. Exhibit true autonomy and intelligence. True autonomy means वो सिक्वेंशियल पैटर्न पे काम नहीं करता है. जो करंटली अवेलेबल एनवायरनमेंट है, अवेलेबल टास्क है, उसके ऊपर काम करेगा, बट सिक्वेंशियल टास्क पे काम नहीं करेगा. सिक्वेंशियल मीन्स कि अगर 5 बार ये चीज हो चुकी है तो छठी बार ये करना है. सो दैट सिक्वेंशियल थिंग्स कैन नॉट बी डन बाय द एआई सिस्टम. सो दिस आर द थिंग्स नॉट डन बाय द एआई सिस्टम. दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ एआई, ठीक है. So how we can formulate the problem in the AI, or what can be the problem first of all, and how we require to solve that problem through AI. So there are some steps available to formulate the problem, and then we can go for the action, okay. So how we can formulate? So there are some steps to solve the problem, ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक स्टेप्स टू सॉल्व, ठीक है. जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो भी कोई भी काम करने से पहले क्या करेगा, इट विल डिवाइड द होल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड स्टेप बाय स्टेप इट विल डू द वर्क, ठीक है. तो दे विल डू वर्क ऑन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. द सेम वे AI system will also implement the same thing and do the work step by step. So there are two major steps to solve any AI problem. The first is goal formulation and the second one is problem formulation. Now what the most important thing is goal. If the system is having goal, then only they will do action to achieve that goal, right? And that's why the first step is goal formulation. So goal formulation में क्या होगा? This one is the first and simple step in problem solving. It organize finite steps to formulate a target which required some action to achieve the goal, ठीक है. So and this particular thing will be done by the is based on the AI agent. Now AI agent क्या है वो हम अभी next topic ही देखेंगे डिटेल में, but agent is responsible to do this goal formulation and then problem formulation also, ठीक है. तो ये सारी चीजें वो ही करेगा. अब
जिस हिसाब से आपका गोल है उस हिसाब से एआई एजेंट को डिजाइन करना, ठीक है। सो नाउ योर गोल इज टू क्लीन द रूम, ठीक है, थ्रू ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। सो एआई एजेंट कौन है आपका? दैट वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। और वो वैक्यूम क्लीनर की जो फंक्शनलिटी है वो एआई एजेंट का आर्किटेक्चर है, ठीक है। एंड गोल क्या है आपका? कि पूरा रूम साफ होना चाहिए। और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होगा? सो एक्शन टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल, ठीक है। सो नाउ द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ओके। So it is one of the core step of problem solving which decide that action should be taken to achieve the formulated goal, ठीक है। Same like if you want to go to college, okay, so if the college timing is 9 to 5 means what will be your goal? आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज का टाइमिंग 9 to 5 है, then what will be your goal? Yes, reach on or before time, ठीक है, 9 o'clock in the college. That will be your goal formulation. Now to achieve this goal formulation, what you will do? You will design the problem formulation. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होगा? कि आप सबसे पहले ही रेडी हो जाओगे जाने के लिए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि घर से कॉलेज तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है। सो बिफोर हैंड आप घर से निकलोगे और कॉलेज के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, कि आप कैसे जाना चाहते हो, टू व्हीलर से जाना चाहते हो या फिर रिक्शा से जाना चाहते हो या ट्रेन से जाना चाहते हो, उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा टाइमिंग का। तो दिस आर ऑल एक्शंस, ओके। और उसके बाद भी अगर सपोज आप टू व्हीलर से जा रहे हो, ठीक है, कहीं पे ट्रैफिक जाम मिल रहा है, टाइमिंग जो है वो एक्सीड हो रहा है, सो क्या करोगे आप? प्रोएक्टिव थिंकिंग, ठीक है, कि भाई मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। सो व्हाट यू विल डू? यू विल टेक अनदर रूट, हाँ, इमीडिएटली, एंड यू विल रीच ऑन टाइम। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ओके, कि जहां पे आपने क्या एक्शंस को डिजाइन किया बिफोर हैंड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू अचीव द फॉर्मुलेटेड गोल. In AI, this core part is depending on software agent, which consists of some component to formulate the associated problem. ठीक है, तो ये कैसे होगा? थ्रू सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, अभी इसी को हम और डिटेल में देख रहे हैं कि हाउ टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, ठीक है। सो देयर आर सम कंपोनेंट associated with it to formulate this problem. The first is initial state, action, transition, goal test, and path costing. So these are the 5 parameters, or you can say component, to formulate the problem. ठीक है, so initial stage क्या है? This stage required an initial state for the problem which start the AI agent towards a specific goal. जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि इसी टाइम पे आपको कुछ नई मेथड को इनिशियलाइज करना हो, कुछ नया प्रॉब्लम डोमेन इनिशियलाइज करना हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नया कैसे? कि योर इनिशियलाइजेशन थिंग इज योर होम, ठीक है, होम एनवायरनमेंट। आपको कॉलेज से घर से कॉलेज जाना है, होम एनवायरनमेंट इज योर इनिशियल स्टेज, राइट? बट मे बी पॉसिबल यू रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट न्यू मेथड। आज मेगा ब्लॉक है ट्रेन का, सो नाउ यू रिक्वायर टू थिंक कि अब मेरा ऑल्टरनेटिव और रास्ता कौन सा है जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टू व्हीलर से जाने के लिए क्या करेंगे या फिर रिक्शा से जाने के लिए क्या करेंगे, तो दैट यू रिक्वायर टू चेक, ठीक है। सो वो आपका इनिशियल स्टेज पे आएगा. Then after actual action, this stage of problem formulation work with the function with a specific class taken from the initial state and all possible action done in this state. तो यहाँ पे एक्शन क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली हम कॉलेज से घर से कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है. एंड देन आफ्टर in between we are in the transition state. Transition state क्या है? The state integrates the actual action done by the previous action state and collect the final state to forward into their next state. अभी ये stage previous कौन सा है, next कौन सा है? So now suppose you want to reach to college, okay, you require two transportation. मे बी पॉसिबल पहले आप ट्रेन यूज करोगे, उसके बाद रिक्शा यूज करोगे. सो नाउ फर्स्ट
एक्शन का इनिशियल स्टेट क्या था आपका, घर से एक्शन में आपने ट्रेन में ट्रैवल किया, और ट्रेन का ट्रैवलिंग एंड रिक्शा का ट्रैवलिंग दोनों ही एक्शन है, बट in between you are in the transition state where you go from train to rickshaw. Clear हुआ? To go to forward to your next stage. Clear हुआ सबको ये? तो that is what the transition is. Maybe possible after rickshaw you require to walk. That is again one transition state. Okay, to reach to your goal. Clear हुआ सबको ये? So that is what the transition is. Then after goal test, which is very, very important whether you have achieved your goal or not. Clear? So this state determines the specific goal achieved by the integrated transition model or not. Okay, so whenever the goal achieved, stop the action. ठीक है, तो जहां पे भी आपको पता चल रहा है, even during the action also you require to test the goal whether you have achieved or not. ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके चलते ही रहना है. You require to see whether the college is there or not. कॉलेज आ गई कि नहीं, नहीं आई है तो चलना है, पर आ गई है तो रुकना भी है. Clear? So that is what your goal test. Okay, and then after always the important parameter in this problem formulation is path costing, which is very, very, very important for each and every AI system. Now, what is this path costing? This component of problem solving numerical assign what will be the cost to achieve the goal. Okay, it requires all hardware, software and human working cost. Clear? So now if you are going from home to college, okay, the cost कौन कौन सी होगी? एक तो ड्यूरेशन कम होना चाहिए. क्लियर? ऐसा नहीं है कि भाई आधा घंटा की जगह पे 1 घंटा लग रहा है आपको जाने के लिए. ठीक है, प्लस सेफली पहुंचना चाहिए, प्लस कम से कम कॉस्ट में पहुंचना चाहिए. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स associated with the past costing, and now each and every step will count the path, will count the cost. Okay, each and every step will count the cost. Okay, in the action. ठीक है, तो ये कैसे होगा वो हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा. बट आपको ये समझा sorry. So for any problem solving in AI you require to do two things. First is goal formulation and second is problem formulation. And under this problem formulation what you require to do is you require to design your initial state, okay, or state your initial state, and then after what all action you require to perform, what are all transition during the action, and then after goal test, okay, whether you achieved your goal with the determined cost or not, and then after path costing. Clear हुआ सबको ये? Any question in this problem formulation, students? No. So in this particular question we have again and again said AI agent. देखो यहाँ पे goal formulation में भी हमने बोला कि goal is based on AI agent. ठीक है, यहाँ पे initial state में भी हम बोल रहे हैं कि AI agent towards a specific goal. Who will start? तो AI agent will start the action. Okay, so what is this AI agent first of all, and what is this intelligent agent? ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले एजेंट को कैसे डिजाइन करना है उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज एन एजेंट? तो एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन परसीव इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर and act upon that environment through effectors or actuators. Okay, so now the keywords are sensors. So sensors means if we are talking about human agent, then we are having that 5 senses. Okay, we can see, we can smell, we can hear. ठीक है, तो ऐसे हमारे जो 5 senses है, the same way agent should have that sensors so that agent can perceive the environment कि उसके आजू बाजू क्या चल रहा है, और उसके बेस पे फिर वो क्या करेगा? एक्शन करेगा वो एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, और एक्शन वो कैसे करेगा? थ्रू इफेक्टर्स और एक्चुएटर्स विच आर मोटर्स. यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स कि जिससे मूवमेंट पॉसिबल होगा. ठीक है, तो एक्चुएटर्स और इफेक्टर्स क्या है? मूवमेंट के लिए, एक्शन के लिए. ठीक है, और सेंसर्स क्या है? एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए. ठीक है, कि एनवायरनमेंट कैसा है. क्लियर हुआ? सो इफ वी आर हैविंग डोमेन स्पेसिफिक सिस्टम देन ऑल्सो वी रिक्वायर दिस. अगर हम लोग चेस की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो अगर कोई अपोनेंट है हमारे पास एज अ मशीन फॉर चेस, फॉर प्लेइंग चेस, तो भी उसके पास भी ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो किस तरीके से सामने वाले ने क्या खेला है, उस हिसाब से मुझे एक्शन करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट को समझने के लिए आई रिक्वायर द सेंस। ठीक है, तो मुझे मेरे पास कैमरा होना चाहिए जिससे मुझे पता चला कि क्या उसने क्या प्ले किया है, वो पता करना चाहिए। एटलीस्ट 5 में से कुछ सेंसेस तो होना ही चाहिए, देन ओनली वी कैन गो अहेड विद द एक्शन। ठीक है, सो दैट इज देयर। सो एजेंट सबको समझ में आया। एजेंट क्या है? जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, द एजेंट विल परसीव एन एनवायरनमेंट through sensor and act upon it using effectors or actuators. Okay, so that is what agent is. Now there are 3 type of agent: human agent, robotic agent and software agent. Human agent means हम लोग जिसके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, parallel to sensors and other organs such as hand, legs, mouth for effectors. ठीक है ना, जहां पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जिसमें मूवमेंट हो रही है, हैंड, लेग्स, माउथ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एक्शंस करने के लिए जो ऑर्गन है वो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ह्यूमन एजेंट इज हैविंग। देन आफ्टर वी हैव रोबोटिक एजेंट। रोबोटिक एजेंट जो है, वॉट एवर द सेंसरी ऑर्गन वी आर हैविंग इन ह्यूमन एजेंट, that will be replaced in this robotic agent through hardware. Okay, so now robotic agents are having camera instead of eyes. ठीक है, infrared range finders for the sensor, various motors and actuators for effectors. Okay, so ये सारी चीजें किसके पास है? रोबोट्स के पास। And we have software agent also, where we are having kind of programs to perform the actions. Okay, so software agent now depend on AI system. किस डोमेन में आपको AI सिस्टम को डिजाइन करना है, उसके बेस पे आपको ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो एजेंट क्या है वो हमने समझा। ठीक है, what is agent? Anything that can gather information about its environment and take action based on that information. Okay, it can be human agent, it can be robotic agent, ये सारे robotic toys हैं। ठीक है, और can be your software agent in the form of program. ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये कि एजेंट क्या है यहाँ पे? ठीक है, नाउ इंटेलिजेंट एजेंट के पास 3 चीजें करनी है उसको। ठीक है, तो वो चीज क्या है वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंसर्स तो सबको समझ में आया है अभी भी। सेंसर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अगर सब लोगों ने देखा होगा कि जब आप मॉल में एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली दैट डोर ओपन फॉर यू। ठीक है, इट मीन्स इट इज सेंस सम मूवमेंट, and based on that movement that system will open the door for you. Okay, so that is what the change in the environment they are detecting through sensor and acting upon it. Okay, तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है? दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। एजेंट ऑब्जर्व इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर। तो ये सेंसर तो हमें समझ में आ गया था कि ये जो सेंसर है, उस सेंसर के थ्रू वो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्चुएटर्स को और डिटेल में देख लेते हैं एक बार, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो। एक्चुएटर्स आर द कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू मोशन। कोई भी आपको एक्शन करनी है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? एक्चुएटर्स। ठीक है, एक्चुएटर्स कैन बी इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर्स, रेल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई रोबोट चल रहा है तो चलने के लिए भी वो मूवमेंट चाहिए, तो वो मूवमेंट क्या है? एक्चुएटर्स। एंड इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर्स आर द डिवाइस विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अफेक्टर्स कैन बी लेग, व्हील, आर्म, फाइंडर्स, जहां पे ये मोटर्स लगे हुए हैं, गियर लगे हुए हैं, वो पार्ट को इफेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सो इफेक्टर और एक्चुएटर दोनों ही मूवमेंट के लिए हैं, और सेंसर्स जो है वो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। दैट इज व्हाट द इंटेलिजेंट एजेंट इज हैविंग। क्लियर हुआ सबको यहां तक? इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है,
ठीक है, yes, yeah, any question up till now, students? Hello. Yes, Ma'am, will you please repeat the actuation? yes. हम लोग यहाँ पे थे, एक्चुएटर्स क्या है, वो पार्ट, किसी भी पार्ट को मूव करने के लिए जो चीज चाहिए ना, कंट्रोलिंग चीज, दैट इज एक्चुएटर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग, लाइक मोटर्स है, गियर्स है, ये सारे जो है ना वो एक्चुएटर्स है। बट ये जो मोटर गियर जिस पार्ट में लगे हुए हैं वो पार्ट को इफेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि पैर में लगे हैं या फिर हाथ पे लगे हैं, फिंगर्स पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो जो पार्ट है ना उसको इफेक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, हाँ, तो ये एक्चुएटर और इफेक्टर दोनों ही मिला के ही आपका एक्शन होगा, ठीक है। आपको लैग मूवमेंट दिख रही है, पर लैग के अंदर क्या है, तो कुछ गियर्स, कुछ मोटर्स लगे होंगे, तभी वो इंटरनल पार्ट्स, यस सुबेंद्र, वेरी गुड, इंटरनल पार्ट्स इज योर एक्चुएटर्स एंड एक्सटर्नली जो दिख रहा है वो इफेक्टर। क्लियर हुआ सबको अभी ये? We will stop here and from next lecture onwards we will see some terminology we are using in the AI system, ठीक है, तो वो terminology क्या है वो देखेंगे and then we will go for the different models. Okay, thank you everyone.